हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मेरे को बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है बिकॉज इन द पास्ट 2 वीक्स आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ ट्रेड्स एंड आई हैव ऑल्सो एग्जिटेड अ लॉट ऑफ ट्रेड्स बिकॉज ये जो पास्ट 2 वीक्स थे ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थे मार्केट्स में एंड उस वजह से मैंने ट्रेड्स लिए एंड काफ़ी सारी न्यू पोजिशंस बिल्ड की, काफ़ी सारे आइडियाज़ चेंज हुए। सो आई विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट in this video. Also, we look at some key data that we've had in this week and उसके बारे में हम बात करेंगे and वो डेटा कैसे अफेक्ट कर रहा है डिफरेंट एसेट्स को फाइनेंशियल मार्केट्स में. So let's go ahead and do that. And before we get in this video, I would just like to give a disclaimer कि ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बना रहा हूँ एंड मैं सिर्फ अपने थॉट्स एंड ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ ऑन द मार्केट एंड ये किसी भी तरह से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है. सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So सबसे पहले let's look at the key data that we've had this week and we actually had this yesterday. So हमें कल PPI का डेटा मिला है which was forecasted at 0.3% but then we got 0.5% and PPI month on month was expected to be 0.3% but we got 0.7%. अब इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन है that is still on the rise एंड क्योंकि इन्फ्लेशन इज स्टिल स्टिकी एंड इट इज स्टिल ऑन द राइज, तो उस वजह से फेड रेट कट्स नहीं कर पाएगा कुछ टाइम तक बिकॉज ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी एलिवेटेड है जो कि इन्फ्लेशन को ऐड कर रहे हैं. एंड देन विद दिस रीसेंट डेटा ऑफ पीपीआई हमें ये रीडिंग्स और कंफर्म होती हुई दिख रही है कि इन्फ्लेशन इज स्टिल देयर एंड इट्स ऑन द राइज. तो ये एक बहुत की डेटा था कल का जो हमें मिला जो कि यूएसडी के लिए बुलिश है बट एसेट्स लाइक स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड उन सब के लिए ये बेरिश है बिकॉज वी वांट लोअर इन्फ्लेशन सो दैट द फेड कैन कट रेट्स फॉर एसेट्स लाइक मे बी स्टॉक मार्केट, फॉर एग्जांपल नैस्डैक, US 30 और गोल्ड. सो ये उन चीज़ों के लिए बेरिश है बट फॉर द डॉलर दिस इज़ प्रिटी बुलिश एंड इसलिए मैं डॉलर में काफ़ी सारे सेटअप्स देख रहा हूँ एंड मैं एक्चुअली अभी मैंने एक ट्रेड भी लिया हुआ है डॉलर के फेवर में. सो आई ऑल्सो टॉक अबाउट दैट इन जस्ट अ मिनट. उसके अलावा वी हैड द FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस yesterday, actually today because we had that at 12 a.m. So इसके अंदर Jerome Powell sounded very hawkish because he talked about elevated oil prices and inflation उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है जहाँ पे फेड ले जाना चाहता है. दैट इज द 2% गोल दैट दे हैव. बट ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द डुअल मैंडेट दैट दे हैव कि फेड की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो है कि एक तो इन्फ्लेशन को 2% तक लेके आना है बट साथ के साथ लेबर मार्केट को भी सपोर्ट करना है एंड जॉब्स क्रिएट करनी है फॉर द US सिटीजन्स. तो ऑफ कोर्स जेरोम पावेल ने डुअल मैंडेट की भी बात की बट ही साउंडेड अ बिट मोर हॉकिश. यानी he sounded like he wanted to support the currency for a bit and not really cut rates and just hold for some time. So ये मीटिंग से हमें जेरोम पावेल थोड़ा एक हॉकिश स्टांस लेते हुए दिखे and on the basis of that markets really moved and we saw strength in the dollar during the press conference. So now let's switch on to trading view and see key different assets क्या कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद ऑयल. ऑयल के अंदर मैंने ये ट्रेड रिसेंटली एंटर किया है. इफ़ यू बीन वॉचिंग माई वीडियोज़ आपको पता होगा कि मैंने पहले यहाँ पे एक ट्रेड लिया था अराउंड 65-64 एंड देन मैंने उसमें प्रॉफिट बुक किया था अराउंड 71-72. बट देन नाउ आई हैव री एंटर्ड दिस ट्रेड एट 92.71 एंड इसमें मेरा स्टॉप लॉस इज 88.20 जस्ट बिलो दिस लो दैट वी हैव हियर, दिस लो. So इस ट्रेड के अंदर आई एम लुकिंग फॉर हायर प्राइसेस इन ऑयल ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड एक्चुअली इसराइल ने साउथ पार्स करके एक फील्ड है, एनर्जी फील्ड ईरान की, उस पर अटैक किया था विच विल ऑल्सो लीड टू हायर ऑयल प्राइसेस इन अकॉर्डिंग टू मी. सो दैट इज़ वॉट आई थिंक अबाउट ऑयल राइट नाउ. उसके अलावा जो मैक्रो डेटा हमें मिला है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है ऑयल के लिए. Although higher inflation is a bearish thing for oil as well because
ऑयल को सपोर्ट करने के लिए रेट कट्स जो होते हैं, जब इकोनॉमी फास्ट पेस पे ग्रो कर रही होती है तभी ऑयल का ज़्यादा यूज़ होता है, तो दैट इज़ अ बेरिश थिंग. बट देन ग्रोथ मेट्रिक्स आउट ऑफ द यूएस हैव बीन प्रिटी स्ट्रांग, एंड लेबर डेटा में भी इम्प्रूवमेंट है. मतलब बिकॉज एनएफपी अच्छा नहीं था, बट अदर देन दैट जो हमें डेटा मिला है वो काफ़ी स्ट्रांग था labor market wise भी. So that is something that I'm looking at and keeping in mind. And इसके अंदर मेरा एक of course defined risk है, and that is $65. So I'll only be risking $65, and अगर ये trade मेरा against जाता है तो I will of course stop out. अब as for how I'm managing this position, if it goes in my direction, तो मैं 4 आवर के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करता दिखूंगा. अभी मैंने स्टॉप लॉस अपना जहाँ पे है वहीं रखा हुआ है, and I haven't really moved that right now because I'm waiting for this supply at 98.11 to break, and from there if we do see higher highs and higher lows come into the picture, तो फिर मैं अपना स्टॉप लॉस हायर ट्रेल करूँगा with price action. So that is what I'm going to be doing in oil. And मेरे जो दो factors हैं to be taking this trade are still geopolitical tensions are elevated, and उसके अलावा जो macro data that we've received is pretty strong. एंड तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो COT जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे हैव बीन एडिंग टू देयर लॉन्ग पोजीशंस इन ऑयल क्वाइट सब्सटैंशियली, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू गोल्ड. तो गोल्ड के अंदर इफ वी मूव ओवर टू द डेली चार्ट वी कैन सी कि वीव सीन सम सेलिंग in the past couple of days, and this is mainly because of higher inflation expectations. अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेंगे, अगर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेंगी या इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो गोल्ड विल ऑफ कोर्स मूव लोअर, बिकॉज फिर रेट कट्स नहीं होंगे एंड डॉलर थोड़ा बुलिश होगा, एंड डॉलर में हम स्ट्रेंथ देखेंगे. इस वजह से हम गोल्ड में सेलिंग देख पा रहे हैं. Of course now you can argue कि geopolitical tensions हैं तो gold ऊपर जाना चाहिए, but that is not really the only thing that is driving gold prices right now. Gold prices साथ के साथ macro data भी देख रहे हैं and inflation भी देख रहे हैं, जिस वजह से we have come down to this support now. I think we do have a bit bearishness for gold in the coming days. Of course ये मैं predict नहीं कर रहा हूँ, it's just I think that can happen because higher inflation means no rate cuts means strength in the dollar, and strength in the dollar means lower gold prices. And actually मैं इसको एक positive चीज़ की तरह ही देख रहा हूँ because we haven't really had any pullbacks in gold. So if we can move down to maybe this 200-day moving average or this 100-day moving average, so then I will look for bullish gold setups provided कि हमें उस टाइम पे जो macro data है वो strong मिले. And maybe I'll also look to invest in gold at some point if we do really get lower gold prices. So that is something that I'm going to do in gold if it does come lower. Now moving on to the trades that I've taken. So I entered this I entered GBP USD shorts. This was around I entered the trade on 18th March. That was, I believe, yesterday. Yes. So I entered the trade here, and then we saw strength come into the dollar following the PPI print, and उसके बाद से we've seen selling. So अब मैंने यहाँ पे जो आप ये रेड लाइन अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस पे मैंने थोड़े से पार्शल्स ले लिए हैं. Like I entered the trade with 0.08 lot size, and then I've booked 0.02. So that is what I'm doing for GBP USD, and I booked around $20, I believe. So the rest of the position is still running, and what I'll do now is I'll continue to trail my stop loss into profit as we do see lower highs and lower lows in GBP USD. मेरा जो actually stance है on the dollar is still I'm very bullish on the dollar right now because जो हमें data मिल रहा है वो काफ़ी strong है, plus elevated oil prices means higher inflation, and that will be another tailwind for the dollar. So वो चीज़ अभी मैं दिमाग में रख के एक bullish bias maintain कर रहा हूँ on the dollar, and I'm actively looking for setups. ये ट्रेड में भी मैं अभी इसलिए हूँ एंड मैंने और ज़्यादा पार्शल्स नहीं बुक किए इसलिए बिकॉज आई स्टिल बिलीव दैट देयर इज़
room towards the downside for this pair, because I do see near term strength in the dollar. And if this changes, then I will of course trail my stop loss and trail out of my position. So let's see what happens in GBP USD. सो डॉलर के अंदर वी कैन सी कि मैंने एक्चुअली डॉलर को भी इस बार काफ़ी ज़्यादा दिमाग में रखा था टू फाइंड अ गुड एंट्री, एंड मैंने देखा कि 4 आवर पे वी आर मूविंग, वी आर टेस्टिंग दिस 50-day मूविंग एवरेज आफ्टर अ स्टीप पुल बैक. So I entered the GBP USD short when the dollar was here, and yeah, as you can see, the dollar has now moved in my favor, and I'm currently sitting in profits in my GBP USD short position. So this is something different that I've done. Usually I don't really track dollar that closely when I'm taking a trade against or in favor of the dollar, but this time, because I wanted to find a very accurate entry, so that this is something that I did this time around. एज फॉर माई पोजिशन ऑन ऑजी डॉलर, जो मेरी GBP ऑजी डॉलर में पोजिशन थी उसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, एंड आई बिलीव आई मेड अराउंड $34 इन दिस ट्रेड, बिकॉज मैंने यहाँ पे भी पार्शल्स ले लिए थे ट्रेड में, एंड देन आई टुक द रेस्ट ऑफ द पोजिशन आउट एट अराउंड 1.88680, विच मेंट कि मैंने आई मेड अराउंड $34 इन दिस ट्रेड लाइक आई सेड. उसके अलावा जो मेरी ऑजी एन में पोजीशन है दैट इज स्टिल रनिंग, बिकॉज इसके अंदर जो मेरी बायस है दैट इज अ बिट मोर बुलिश, एंड सो ये ट्रेड मेरा अभी भी रनिंग है. माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज अराउंड, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन. My trailing stop loss is currently here, and if price does come lower below this price, then I will take out my position and will trail out of it. So abhi ke liye I'm looking for higher prices still in the Aussie dollar and Aussie dollar Japanese yen. So let's see how this trade plays out. So now let's talk about US 30 and pretty much the entire US stock market is going lower because जो inflation expectations हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिस वजह से फेड रेट कट्स नहीं कर रहा है, एंड फेड रेट कट्स नहीं कर रहा है तो कंपनीज को वो फ्यूल नहीं मिल रहा है दैट दे नीड टू बी एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस एंड टू मेक प्रॉफिट्स फॉर देम. So इस वजह से we do see US 30 come lower, and then this is also because of course geopolitical tensions and elevated oil prices like I said. So अभी के लिए we do see this index come lower, and actually I was looking for short position setups. If you have been watching my videos, so you must be remembering that I took a trade over here, but then I got stopped out of this trade just by a whisker. So उसके बाद से मैंने honestly कोई और setup अभी देखा नहीं है इसके अंदर, but if we do continue to break lower, then I will look to enter a position if I do find the right setup. अभी के लिए मेरी bias on US 30 and the US stock market is a bit bearish to neutral is how I would call it, and yeah, let's see where Dow Jones goes from here. So अब इस वीडियो में आई हैव कवर्ड प्रिटी मच एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू. अभी भी जो चार्ट ऑफ द डे है दैट इज स्टिल यूएस ऑयल, बिकॉज सब उसके अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है, एंड आई हैव अ ट्रेड रनिंग ऑन दैट. एंड उसके अलावा भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक व्हाट्स हैपनिंग जियोपॉलिटिकली अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज अभी के लिए वही एक मेजर फोर्स है जो मार्केट्स को ड्राइव कर रही है एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को ड्राइव कर रही है. सो दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू बी लुकिंग एट. सो मैं उस पर एक क्लोज वॉच रख रहा हूँ. उसके अलावा लाइक आई सेड मेरे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स रनिंग है इस टाइम पे. आई हैव अराउंड 3 ट्रेड्स रनिंग, जो कि यूजुअल से बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, बिकॉज नॉर्मली आई जस्ट हैव 1 or 2 trades running, but yesterday I had like 4 trades running, and then I stopped out of GBP Aussie dollar for a profit of course. So उसके बाद I still have 3 trades running in GBP USD and US oil, then Aussie yen. So ये 3 trades I still have running on my account, on my swing challenge account, and yeah, so I'll update you guys अगर मैं इसमें कुछ भी changes करता हूँ either on my Insta account or my X account. So that is what I'll be doing, and
I'm really looking for Aussie dollar strength and dollar strength, and I'm looking to trade that against GBP USD or weaker pairs like the New Zealand dollar. So that is what I'm trying to do on the forex side of things. As for commodities, uh, I do have a trade running in oil, but I'm not really looking to trade precious metals right now, like gold and silver, because उसके अंदर मेरा जो stance है that is pretty neutral. And if gold and silver do give me lower prices, then I'll become more interested, but right now I don't really have a setup on them. So yeah, that is it for this video, guys. I hope you found this video helpful and आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी इस वीडियो से, and I'll see you guys in the next one.